Okay. Good morning, sir. We are live today. Sir, we will start with those questions which are already asked to us. Sir, there are many government exams pending which are not being taken place, and there is anxiety, especially with the recruitment as well as other sectors government exams. In that case, what should one do? Especially those who are specifically preparing for certain exams. They're asking us these questions on mail. Okay, good morning, everybody, and good morning, Yogita. Yogita, this is a very pertinent problem which is affecting a lot of our youth, and the situation is bad. I mean, the only thing I can say is that the government has not been doing an efficient job. There's no doubt about that. Now, keeping that aside, as I always keep talking of promoting proactive behavior, so what we have to do is focus on what is in our hands. So one is that you have the hope that things will work out as far as these exams, results, and all are concerned. Apart from that, you start focusing on what next best options you have for yourself. And that implies upgrading your knowledge, your skills, your physical fitness, whatever the prospective job which you are trying for, or other alternative career options that you have, get on with that. Because keeping endlessly waiting and getting frustrated and not taking any proactive action will result in lowering of not only your morale but as also your day-to-day performance, and that is going to reflect in whichever field of job you may go, or you may be trying alternative careers. So that is what you should do. Focus on yourself. Don't avoid getting frustrated. See what is in your hands and keep focusing on that, and remain energized. That's the answer I have for you. Situation is bad, but that's the best we can do. Thank you. Okay. People are still asking about territorial army entry, new change in policy or something. The answer remains the same. We have to do our best, whatever comes up. Sir, next is regarding TAT. Sir, what if the accidents and all are shown in the picture? They see pictures in which some accident is shown. These are very simple to write stories upon. You have to pick up a main character who will resolve the problem. First aid assisted देना, individual का family members को inform करना, early hospitalization करना, and as soon as the family members catch up and all that, you can take off for your job. So these are the actions which you have to do. So these are pretty simple stories to write upon. I have few views on this which would be relevant for you people. There are a lot of extra chatak people. There are a lot of, and I'll explain to you what is this extra chatak thing. ये कोचिंग वोचिंग वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, ये वो कहते हैं ये तो सभी कर देंगे,
तो हमने कुछ आउटशाइन करना है, हमने कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो था डिप्टी कलेक्टर के पास गया और इधर उधर गया, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास गया, और उसने फिर वहां पर जो था यू नो रेड लाइट, वो लाइट शाइट उधर लगवा दी कि जिससे वहां पे एक्सीडेंट ही फ्यूचर में कभी ना हो पाए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दिस पीपल इंडल्ज इन। तो ये काम नहीं करना है, ये काम करना बेवकूफी का है, क्योंकि जो है हमारे गडकरी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो है, रोड सरफेस वाला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो ही नहीं एक्सीडेंट वगैरह कम कर पाए। तो ये जो इंडिविजुअल जो अपने स्कूल कॉलेज जा रहा था, इट इज बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज, एंड डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दैट। कि और कोई डूबते हुए को बचाया तो वहां भी फिर कुछ ऐसा कर दिया, मार्किंग करा दी कुछ, आई मीन समथिंग। क्या फ्यूचर में सारी दुनिया में लोग डूब जाए लेकिन उस स्पॉट से कोई ना डूब पाए। दिस थिंग डोंट वर्क आउट, सो डोंट गेट इन्वॉल्व विद सच थिंग। इंडिविजुअल को बचा लिया है, उसके फैमिली मेंबर्स तक पहुंच गए हैं, दैट इज गुड इनफ। ओके, थैंक यू। Akashdeep Singh has asked, Sir, how to prepare for SSBs from class 11th? He is in 11th. अच्छा, आप बेटा हमारे जो है सबसे तो अच्छी एक मैं एडवाइस आपको दूंगा, आपके लिए यूजफुल रहेगी, वो ये है आप हमारी किताब ले लीजिए, द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। Go through it thoroughly. You have got time to understand aspects of personality development, as also SSB, as also fitness aspects. अच्छे से समझकर उन्हें अप्लाई करिए। Think that there is nothing like preparation for SSB. Preparation for SSB, or if you talk of preparation for SSB, it means leading an effective life. Because if you are a competent person in your routine life, that is what is going to get reflected in the 5-day SSB process. So you do not have to get into the nitty-gritties of SSB, जैसे कई लोग करते हैं, वो स्टोरीज प्रैक्टिस करना, गांठे मारना रस्सी की, सच लाइक थिंग, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर पता करना, उनके जवाब लिखना और रटना, फिर OLQs की डेफिनेशन पढ़ के रटना कि 15 OLQs क्या हैं, क्या डेफिनेशन है। दैट इज ऑल ट्रैश, प्लीज डोंट डू दैट। इफ 11th में है, आप पढ़ रहे हैं, तो अपना बेसिक अच्छा रखिए। बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है मैथमेटिकल एबिलिटी एंड लैंग्वेज एबिलिटी, दैट इज इंग्लिश। तो दीज आर द फाउंडेशनल स्किल्स, इनके ऊपर ही बेस होती है बाकी स्किल्स आपकी जो डेवलप करते हैं आप नॉलेज। तो इनको सॉलिड रखिए, फिर उसके बाद अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को भी सही रखिए। गेट क्लैरिटी, मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, and some extracurricular activities whatever are feasible, do take part in that. कोई बड़ा खिलाड़ी होने की जरूरत नहीं है, अगर शौक है तो खेलिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। If you do these many things, then you will be on the right track and you should be able to clear the NDA examination with good marks, and then your chances of selection would also be high. So in general, this is my advice to students who are in 11th class and who are aspiring to join the defense forces. Okay, that's it. Okay, sir. Aditya Jayant has asked, Sir, how to deal with people who try to act superior or tough, but clearly they aren't. The ones that try to take control of the situation and clearly aren't. This is sort of in my workplace or NGO that he is talking about. Okay, such things you will keep coming across throughout your life in all kinds of situations, in school, class, workplace, in SSB, everywhere such things will happen. See, the best thing to do is to understand that you have control only over your thoughts and actions and not that of others. So when you start seeing that the problem is there with the other person, you are creating problems for yourselves and you will only get frustrated because you cannot alter the behavior of others.
So in the proactive approach which we teach is to focus on your thoughts and actions. So you do sensible things, that's all. And uh, these are the things which are in your direct control, your thoughts and actions. So do them well, remain patient, do things properly. Now, what can happen is that because of your doing things properly, it may have an influence on that other person, which is of a positive nature. But there are also very high chances that it may not have. And if it does not have, you can do nothing about it because those are things which are not in your control. However, you should not give up, and by trying to set a good example, you can only hope that they will get positively influenced. By trying to tell them कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, अनवांटेड एडवाइस, अनास्क्ड एडवाइस देना लोगों को, उससे कोई फायदा नहीं होता है. If you take your mind back to your own life, you would have been hardly influenced by some shiksha which your parents were trying to give you, but you would have definitely been influenced by the actions they were indulging in, both positive and negative. So same is how society works. You would have got influenced by some of your colleagues or teachers who you felt were doing things which were good and you wanted to emulate. Accordingly, it is with others. So these are the aspects of indirect control. So you can only influence them through this method of setting a good example and try and not get frustrated by what is happening. Take the example of this Agnipath scheme. Now, in my view, this scheme is bad. It is neither in the interest of the defense services because it will, in my view, lower the combat effectiveness of the troops. Because these young people, Agniveers, will not be suitable to perform the requisite sensitive tasks in most of the arms and services. That is my personal belief, and I'm quite firm about it. I've had a talk with various my friends, colleagues, senior persons in service, out of service. Even very recently, I was talking to a retired one of the retired Navy chiefs, and he also said, "Yeah, definitely." I said, he said, when you, as an infantry officer, you're finding that these people may not be very effective to perform the roles in the infantry, and yours is the least technical arm. So you can imagine what would be the state for us when we have submariners, sonar operators, radar operators, and all that in the Navy is a very, very difficult. So that is the outlook. Now, what do we do? Is that who's bothered about my opinion? So I mean, whatever influence I have, social media, you students, I write about it, I speak about it, post it on YouTube. इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? That is what I do. हमारा एक ब्रिगेडियर छात्र है, he is decided to fight a case on behalf of the aspirants who were due to join, and जिनका joining नहीं हो पाया, and we felt it is highly illegal, and even this bringing in of this aspect does not stand the constitutional scrutiny in his view and my view also. So we started change, क्या होता है, वो चेंज लाने के लिए वो पिटिशन सिटिशन डालते हैं, वो कर रहे हैं, एंड ही बी फाइटिंग द केसेस एंड ऑल. तो इतना हम लोग कर सकते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट. उसमें फ्रस्ट्रेट होते रहने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि दैट विल नॉट गिव अस एनी पॉजिटिव रिजल्ट. So whatever is in our hands we do. So similar is the thing with these people who are in your immediate contact, who are acting superior. Generally those who act superior actually are not, that's a fact. So this is what you can do and hope for the best. Influence होता है तो होता है, ठीक है, नहीं होता तो तुम क्या कर सकते हो? That's what. Fine. Okay, thanks. Yes, sir. Manish Pokhriyal has asked, in case when IO asks about weaknesses of a person, if we give any weakness of that person, will
will that reflect in our personality as well? Then he has clarified it. For example, his father and he faces the weakness of expression. So will that be okay to say that? अच्छा देखिए, I got this question correct because the question is not clear. तो आई प्रिज्यूम ये वीकनेस अपनी बता रहा है कि किसी दूसरों की बता रहा है? अपनी बता रहा है ना? हाँ, अपनी. हाँ, तो अपनी जो वीकनेस है उसको बता देना चाहिए अनहेजिटेटिंगली, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तो ये बताने में कोई भी हार्म नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इन एनी केस पता चल जाएगा। तो आपके बताने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये पता चलेगा कि उसको ये उसको पता चल जाएगा कि आप ऑनेस्ट हो, और दूसरा आप अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर रहे हो, और वीकनेस एक्सेप्ट करना मीन्स 50% ऑफ द जॉब डन। इसका मतलब कि आप कुछ प्रयास करेंगे उसको सुधारने के लिए, तो अच्छी बात है। अब अगर आप इसको नहीं बताते तो उसका इम्पैक्ट यही होता कि या तो आप जानते ही नहीं, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस लो लेवल की है, और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने कहा भी, अगर आपको कहा होगा, तो आपने उसे इग्नोर किया, और आपको जो है सुधार करने की कोई चाह भी नहीं है अपने में, तो दैट इज वर्स। तो एक्सेप्टिंग वीकनेसेस and stating them openly is a good thing. Forget SSP anywhere in life. It will do you a lot of good and you will be able to improve as a person. Fine. तो ये है बात। ओके, चलिए नेक्स्ट। Okay. Aditya Mishra has asked, sir, what is the impact of having a particular game playing a particular game at a particular level? I belong to a rural area, and with a normal school environment, there had not been. He's saying that there was not certain environment which could provide him encouragement for for pursuing a particular game. देखिए, इससे हम सारी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आप किस जगह से आए हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज थी, और उनका आपने कैसे इस्तेमाल किया, और आप आज किस लेवल पर पहुंचे हो। तो जिसके पास, अब जैसे हमारे साथ में कई आते थे, ये जो था स्पोर्ट्स स्कूल राय के कुछ आते थे। अब स्पोर्ट्स स्कूल राय का स्टूडेंट अगर जूनियर लेवल में, वो जो है नेशनल लेवल में कोई इवेंट खेला हुआ है, तो वो कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि वहां के लोग खेलते ही हैं, वहां का सिलेक्शन ही ऐसा है और वहां की ट्रेनिंग का सिस्टम ऐसा है, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। अब किसी जगह पे जहां पर स्कोप कम है, वहां से आप आकर खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली आपका लेवल ज्यादा था। तो हम, ये बड़ी कॉमन सेंस की जो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब इंटरव्यूइंग ऑफिसर की समझ है, और इस हिसाब से ही आपको असेस करना। मोटी बात इसमें ये है, ये बार बार रिपीट होती रहती है कि ये हॉबीज, गेम, स्पोर्ट्स इनका बहुत बड़ा कोई सिलेक्शन में ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन आप लोग बार बार पूछते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें रहती हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए, अगर वो है, तो आप सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनने लायक हैं। स्पोर्ट्स खेला है तो अच्छी बात है, नहीं खेला है तो भी कोई ऐसे बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा उसका। अब ये थोड़ी कम है कि सब खिलाड़ियों को ही हमने सेलेक्ट करना, और जो खिलाड़ी नहीं रहा उसको हम सेलेक्ट नहीं करना। दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर। ठीक, आई होप दिस क्वेश्चन हैज गॉट आंसर्ड, योगिता। Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए फिर। Saurabh Bandopadhyay has asked, sir, with respect to GTO tasks, how much the structural activities and individual obstacles weigh for final selection if one struggles with the same? देखिए क्या है, असेसमेंट हर चीज का होलिस्टिक होता है। एक सेंटेंस, एक स्टोरी, एक टास्क इज नॉट गोइंग टू डिटरमिन योर सिलेक्शन और रिजेक्शन। ओवरऑल आपका असेसमेंट किया जाए, इसी हिसाब से होगा आपका काम। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं
एक कोई इंडिविजुअल फिजिकली तगड़ा है वो, लेकिन उसका एटीट्यूड गिव अप करने वाला है। तो मान लीजिए उसमें कैपेबिलिटी थी रस्सी चढ़ने की, वो एयरफोर्स के एसएसबी में गया, तो उसने रस्सी 10 नंबर वाला था, वो चढ़ने ही नहीं गया, पहले उसने कहा देखो बाद में देखेंगे। और जो था उसने जो था अपने और ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल किए, और थोड़ा भी कोई मुश्किल जो लगा तो उसने कहा छोड़ यार इसको नहीं करते, अगला ही कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। नाउ द जीटीओ विल बी एबल टू असेस कि इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी है कर पाने की, तो ये कोशिश नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम इज मोर मेंटल देन फिजिकल, एंड दिस इज अ सीरियस, मोर सीरियस शॉर्ट कमिंग देन लैक ऑफ फिजिकल एबिलिटी। क्योंकि इसका मतलब ये कैपेबिलिटी होने के बाद भी इंडिविजुअल में करने की चाह नहीं है, दम नहीं है। तो ये ज्यादा बड़ी वीकनेस हुई। बाकी तो आप अपनी जितनी कैपेबिलिटीज है उस हिसाब से आपको अच्छा करना चाहिए, प्लान करके करना चाहिए आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को, मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन द रिक्विजिट टाइम। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। बट किसी भी एक चीज से असेसमेंट अकेले आइसोलेशन में नहीं हो जाएगा। हाँ, एक बात मतलब कॉमन सेंस की है कि जब एक इंडिविजुअल जब गिव अप करता है कुछ चीज करनी, तो उसकी टेंडेंसी बाकी जगह भी होगी। मतलब मान लीजिए कि उसका जो था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में उसने प्लान ठीक से नहीं लिखी, अभी अर्ली हुई थी एक्सरसाइज, अब उसके बाद वो क्योंकि गिव अप करने वाला उसका नेचर है, वो पुट ऑफ हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट लेवल नीचे गिर जाएगा बाकी टास्क करने में। और अगर छोटा सा कोई अप्रूवल मिल जाएगा तो उससे वो खुश होकर जो है वो अगले एक टास्क तक जो है और एनर्जेटिक रहेगा। तो इसका मतलब ये है दिस पर्सन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय छोटे छोटे काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स, एंड छोटे छोटे नेगेटिव थिंग्स आर एडवर्सली इंपैक्टिंग हिम। Whereas a more solid person वो छोटे सेटबैक को इग्नोर करेगा और छोटे से सक्सेस को भी खास बड़ा नहीं मान के अपना काम करता रहेगा। So that is how it should be. So the main thing answer to your question is that you should not see things in isolation. You should get a overall holistic view that will determine your assessment in GTO and in all tasks. It is not that कि एक सेंटेंस है एक उससे जो है आपका असेसमेंट हो जाएगा. It will be the overall assessment based on the entire battery of psychology tests and the complete interview. Okay, yeah, next question. Sagar Singhal, the extracurricular activities question has already been answered. Then again, the such Agniveer questions are again and again coming because right now that is in move. पूछ लीजिए, you ask क्या है? Okay. Should I go for Air Force Agniveer or expect an opportunity that I will get in SSBs after CDS examination? Amarjeet Singh has asked. देखिए ये बेटा मेरे को आपको एडवाइस सही दे पाना बहुत ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए आपको कई चीजें देखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है आपको अपनी ओवरऑल कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या आप ऑफिसर बनने वाली कॉम्पिटेंस आप में है। अगर आपको काफी भरोसा है कि आप में ऑफिसर बनने वाली कॉम्पिटेंस है, तो फिर आपको अग्निवीर में हाथ डालने का मतलब नॉर्मली नहीं बनता। किन्हीं कुछ केसेस में बन सकता है कि ऐसा आप करें, जबकि आपको जो है फैमिली को जल्दी सपोर्ट करने की जिम्मेवारी है और आप जो है ये टाइम और फंड्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कॉलेजिंग वाला, मतलब एनडीए में आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इस स्टेज में आप हैं, तो फिर अग्निवीर में जाना फिर तो ठीक है। पर इतना मान के आप चलिए कि आप अगर अग्निवीर में जाते हैं तो वहां से अग्निवीर के ट्रेनिंग और जो भी आपका यूटिलाइजेशन वगैरह हो रहा है ये टोटल 4 साल में, मेरे को नहीं लगता
कि आपके पास एनर्जी और टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपको दे पाएगा कि आप ये एसीसी या किसी और एंट्री के थ्रू ऑफिसर बन पाए। लीगली तो मेरे ख्याल से ये ऑल्टर नहीं होना चाहिए, वैसे डिटेल्स हमको मालूम नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि ये अवेलेबल तो होगी, पर लेकिन टाइम आपको आपके कमांडिंग ऑफिसर दे पाएंगे ये सब करने के लिए, ये हाईली क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। बाकी तो फिर मैं यही कह सकता हूं, अगर आप मेरी गाइडेंस के लिए एनरोल करते हैं तो फिर जब मैं आपको इंडिविजुअली पूरा एनालाइज कर लूंगा और आपके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह को, तब मैं आपको जो है बेटर सलाह दे पाऊंगा। एज सच मैं जो हूं, खाली ये सवाल सुन के इंडिविजुअल बेसिस की सलाह सही दे पाना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए इंडिविजुअल को पूरा डिटेल में जानना वाइटल है। नहीं तो मेरी सलाह गलत हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट भी फिर आप पे गलत होगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। Yes, sir. One last question we can take. Anshul Sharma has asked how to do skipping like you. Skipping. नहीं, मैं तो स्कीपिंग बड़ी ऑर्डिनरी करता हूँ। मेरे से अच्छी तो स्कीपिंग ये कर लेती है, ये जो एक्टर जिसने इसका रोल किया था, अपना मैरी कॉम का, किसने किया था? प्रियंका चोपड़ा आ गया था। हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने। तो वो मेरे से बेटर स्कीपिंग कर लेती, तो मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी वो हूँ। इट इज नॉट अ बिग डील यार। स्कीपिंग आप करनी शुरू करोगे तो आई मीन आप 10-15 दिन में जो है कोऑर्डिनेशन ठीक सीख जाओगे और स्कीपिंग कर ही लोगे। मेरे साथ जवान बॉक्सर जिनको मैंने सिखाया था, वो महीने महीने तक में सीख ही गए थे जिन्होंने नहीं की थी। और वो तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ रोप्स भी बड़ी खराब होती थी। अब तो रोप की क्वालिटी अच्छी है, गुड हैंडल्स, वो रोटेट अच्छी तरह कर जाती है। तो इट इज नॉट अ बिग डील। आई मीन वो सेंस आपको डेवलप हो जाता है, और थोड़ा एक बार सेंस डेवलप हो जाए तो यू डोंट हैव टू थिंक। लाइक साइकिल चलाते हुए आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऐसे ही स्किपिंग करते हुए भी आपको सोचना नहीं पड़ता, वो हो जाएगा। ठीक है? या ओके। Okay. Since we have 1 minute more, we can have one more question. Amir Sohail Khan had asked, sir, for SSC tech entries especially, they are showing hazy pictures. So is it this a way to flush out maximum candidates hazy pictures for PPT? इट इज नॉट। आप मेरी बुक प्लीज लेकर पढ़िए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसमें जो है सिचुएशन में एम्बिग्विटी जानबूझ के डाली जाती है, क्योंकि जब एम्बिग्विटी होगी तभी तो आपके अनकॉन्शियस माइंड की चीजें निकल कर आएंगी, इंटरप्रिटेशन में वेरिएशंस आएंगे। अगर हम कलर फोटोग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाते जो कि हाई डेफिनेशन वाली होती, तो इंटरप्रिटेशन तकरीबन सेम सबका होता और उसमें अनकॉन्शियस ब्रेन की चीजें नहीं पता चलती। ये चीज खाली टीएटी और पीपीडीटी के लिए लागू नहीं है, सिचुएशन में भी लागू है। जैसे सिचुएशन में दिया है कि आपका जो था, आप ट्रेन में जा रहे हैं, पर्स खो गया, तो अब आपका विजुअलाइजेशन है, कोई विजुअलाइज कर रहा है कि अच्छा यार ये दाएं बाएं गिरा होगा, मैं ढूंढता हूं तो बर्थ मैट का वो मिल जाएगा, तो उसकी वहां पे सोल्यूशन हो गया। कोई सोचेगा जब सिचुएशन लिखी है तो इसका मतलब ये आसपास ढूंढने वाली, वो पैसेंजर से कंसल्ट करने वाली स्टेट तो निकल चुकी है, तो वो करेगा कि भाई अब मैं एफआईआर लॉन्च करूंगा, अपने एटीएम ब्लॉक करूंगा, एंड थिंग्स लाइक दैट ही विल बी राइटिंग। तो इसमें यही नहीं कह सकता कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। अभी जो उसने इंटरप्रेट किया उसके हिसाब से ही वो स्टोरी लिख रहा है, स्टोरी सॉरी सिचुएशन का रेस्पॉन्स लिख रहा है। तो इसीलिए जो है ये डेलिबरेटली जो है हेजी पिक्चर दी जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट दी जाती है, जिससे कि आपका अनकॉन्शियस पार्ट जो है वो ज्यादा निकल कर आए कि आपकी थिंकिंग किस टाइप। तो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो ये है पार्ट ऑफ दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ द टेस्ट। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एसएससी टेक के लिए कुछ स्पेशली चीजें की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती।
यही पिक्चर्स बाकी सारी एंट्रीज को भी दिखाई जाएंगी. There is just no problem. Yes, there is a slight difference in the battery of the PPDT pictures shown to males vis-a-vis females. There is a difference in that. And that is once again designed considering, I mean, various considerations are kept in mind. So that is the thing. Some common may be there, but there are generally, you will find that the situations and pictures for girls are likely to be different from what they would be for boys. तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि एसएससी टेक के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है कि उन्हें ज्यादा को निकाला जाए, बिल्कुल भी बात. Okay, thank you. Okay, we will wind up today's session. We will meet next time, next Sunday. For any specific query, please write to us at nofrillsacademy@gmail.com. Okay, thank you, boys and girls. Take care. Thanks, Yogita. Bye-bye. God bless.